So, hi everyone. Look at this question carefully. List four precautions which a student should observe while determining the focal length of a given convex lens by obtaining the image of a distant object on a screen. देखो convex lens ये रहा आपका, ठीक है। और पीछे एक स्क्रीन होगी, एक वॉल होगी आपके। ये स्क्रीन मान लीजिए, इस पे क्या बनेगा आपका इमेज। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटा? फार अवे। फार अवे ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है, मतलब आप इन्फिनिटी कह सकते हो। फार अवे ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। तो पहली चीज क्या है? लेंस का जो फेस होना चाहिए, द फेस ऑफ द लेंस पैरेलल टू द फेस ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर? फेस मतलब ऐसे, अगर लेंस है तो ऐसे आपका स्क्रीन होना चाहिए। ओके। एक शार्प इमेज, दूसरा क्या है? शार्प इमेज आपको स्क्रीन पर मिलना चाहिए, ब्राइट शार्प। क्लियर? ये क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द लेंस, ये आपका वी है। केयरफुली मेजर दिस। और एटलीस्ट कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं आपको? 3 ऑब्जर्वेशन। यही आपका प्रिकॉशंस है। केयर 3 ऑब्जर्वेशन इसलिए बिकॉज 3 से ज्यादा ले लें एटलीस्ट अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ज्यादा एरर के चांस, एरर क्या होगा आपका? मिनिमाइज। ठीक है, आप लोग देखा होगा लैब वगैरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं तो वहां ये बोला जाता है कि 10 रीडिंग लीजिए, 12 रीडिंग लीजिए, 7 रीडिंग। ये ऑब्जर्वेशन क्यों बोला जाता है? रीजन बीइंग टू मिनिमाइज द एरर, दैट्स ऑल। और कोई रीजन नहीं है इसका। एक्चुअल वैल्यू के हमारी, एक्चुअल वैल्यू जो है हमारी, मान लीजिए उसके क्लोज हमारा आंसर आए। क्लियर? देयर शुड बी लेस एरर। द प्रिकॉशंस, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। लेंस should be held in position vertical position with its face parallel to, पूरा लिख देते हैं, parallel to screen। ओके। दूसरा, at least 3 observation should be taken, at least 3 observation should be taken। Third, measure the distance between the convex lens and the screen carefully। ठीक है बेटा। Fourth, a clear and sharpest image, a clear and sharpest image
of the distant object should be obtained, should be, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, should be obtained by suitably adjusting the position of lens, adjusting the position of lens. ठीक है. So I hope all your doubts clear. Thanks a lot. If still you have doubt, you can call me, you can connect me, you can subscribe this channel. If you wish, if you think this can benefit you and others, you can share to others. Thanks a lot.